कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के सेकंड पेपर और उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो जनवरी 2024 के टाइम पे जब एग्जामिनेशन हो रहे थे उस टाइम का ये पेपर है। हम इसी के पेपर को एनालाइज करेंगे और इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। ठीक है, आप इस पेपर को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्वेश्चन किस चैप्टर से कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए में वही हमेशा की तरह 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के। शॉर्ट वर्ड्स में आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था, कोलमन ऑफ बेलेंगो ग्लासेस के बारे में बताना था। तो द कोलमन ऑफ बेलेंगो ग्लासेस इज एन extracellular structure that is large and surrounded by columnar epithelium. The animal dwells in a U-shaped tube or burrow with two apertures and two vertical lamps. Even though the worm is lethargic and unaffected by external stimuli, cilia sac covering its body surface allow it to move around its burrow. Second, fossil Yarnmania or Tunicata. तो Tunicata, also known as Eurocarodata, is a subphylum of marine animals that belong to the phylum Chordata. They are characterized by the presence of a notochord, flexible root-like structure during embryonic development. फिर Pedogenesis. So the term pedogenesis is coined by Novan. Pedogenesis is the act of reproduction by an organism that has not achieved physical maturity. It is the production of offspring by an organism in its larval or juvenile form and elimination of the adult phase of the life cycle. In this, an organism bypasses the normal process, the metamorphosis, and instead reaches reproductive maturity. चौथा क्वेश्चन, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो पहले एक्सियल स्केलेटन की बात करते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन इज द कंट्रियल पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट provides support, protection, and stability for the body. It includes skull 22 bones, vertebral column 33 bones, etc. फिर appendicular skeleton, there are two main bone group in the body, one of which is the appendicular skeleton. The appendicular skeleton consists of lower and upper extremities, including the palate and pectoral girdle. Out of the 206 bones seen in the adult human body, there are 126 bones comprising the appendicular skeleton. Question number E. What is the total lung capacity? Total lung capacity TLC, जिसको नाम तो भी जानते हैं, is the maximum amount of air present in the lungs after maximum inhalation. It represents total volume of gas in the lungs when they are full expanded. ठीक है, TLC का फॉर्मूला TB प्लस IRB प्लस ERB प्लस RB, जहाँ पे सॉरी अलग अलग टर्म के मतलब दिए गए हैं कि टीबी क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम, ईआरबी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरबी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आरबी रेसिड्यू वॉल्यूम। ठीक है, सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। पहला शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, इसके अंदर क्या 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, हर क्वेश्चन 5 मार्क के हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, प्री लार्वल डेवलपमेंट ऑफ बैलेनोग्लासेस। तो द प्री लार्वल डेवलपमेंट ऑफ बैलेनोग्लासेस इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस फ्रॉम fertilization to the fermentation of the larva. Step 1 fertilization, step 2 cleavage, step 3 bastula, stage 4 gastrula, stage 5 neurula और step 6 organogenesis. So the pre-larval development of melanogenesis is followed by the formation of the larva, which under a series of most before setting on the substrate and undergoing metamorphism to form the adult form. अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सस। तो स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सस, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सस कंसिस्ट ऑफ माउथ होता है, फेरेक्स होता है, इंडोस्टाइल होता है, इंटेस्टाइन होता है, एनस होता है। ठीक है, इन सब के बारे में आप एक एक वर्ड एक एक लाइन लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेनिएशन ऑफ ममाल्स। तो डेनिएशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ टीथ एंड देयर
arrangement in the mouth. The development of teeth depend on the characteristic of teeth as their type, arrangement, and number of teeth in a species. The dentition of animal whose teeth show succession is known as diphthonode, whereas in animal which one with only one set of teeth through life is known as monopharynx. Each tooth in our mouth consists of crown, a root, and a carbal part. Enamel covers the narrow apical form and the root canal help the root of the tooth, blood vessels, and nerve to access the pulp cavity. Periodontium refers to the collection of commentum, dimorphism, alveolar bone, and gingival together. Chauथा question, associated gland of alimentary canal. So the associated gland of the alimentary canal कंसिस्ट सलाइवी ग्लैंड, इसके अंदर क्या क्या होता है, पेट्रियाइड ग्लैंड होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, सब लिंगुलर ग्लैंड होता है। फिर आगे बढ़ते हैं लीवर एंड पैनक्रियाज की तरफ। तो लीवर क्या होता है, प्रोड्यूस बाइल एंड एसिड इन फैट एंड ऑब्जॉर्प्शन। पैनक्रियाज प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन दैट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। अदर एसोसिएटेड ग्लैंड, पहला गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, अपेंडिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनवर्टिब्रेट्स आर स्ट्रक्चर दैट supplement the primary respiratory organs such as the lungs or gills to provide additional oxygenation. Different organisms have different respiratory organs such as in fish के अंदर swim bladder होता है, branchial respiration, in amphibian skin and म्यूकोफाइनिजिलर कैविटी होता है, रेप्टाइल के अंदर ट्रैकियल लंग्स, इन बर्ड्स एयर सैक्स, नेजल कैविटी, इन मैमल्स these ancillary respiratory organs have evolved to help vertebrates thrive in various environment and in ecological nature. फिर comparative study of circulatory system, तो circulatory system में different group of animal क्लोज सर्कुलेटिंग सिस्टम, इसमें वर्टिब्रेट्स होते हैं, हार्ट स्ट्रक्चर, ब्लड वेसल, सर्कुलेशन पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम्पल ह्यूमन, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड ममाल्स। फिर कोफलोपोड्स, इसके अंदर हार्ट स्ट्रक्चर, ब्लड वेसल्स कैसे होते हैं, सर्कुलेशन पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा आपको। और फिर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंदर ऑर्थोपॉड्स होते हैं, इसका हार्ट स्ट्रक्चर ट्यूबुलर हार्ट विथ 1 to 2 चैम्बर, ब्लड वेसल्स ओपन, साइनस एंड लेमोकॉल, सर्कुलेटरी पैटर्न ओपन सर्कुलेशन, एग्जाम्पल इंसेक्ट, क्रस्टेनियस एंड आर्चराइड्स। फिर आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फाइबा ऑफ 2 ऑर्डर। तो यही हमारे पास ऑर्डर होता है, किंगडम एनिमिलिया, फाइलम कॉर्डाटा, क्लास एम्फीबिया। ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, स्टडी टू कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन क्या है, द ब्रेन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लार्जेस्ट एंड डेंटल ऑर्गन of the human nervous system. It is the control unit of the nervous system which help us in discovering new things, remembering and understanding, making decision and lot more. It is enclosed within the skull which provide frontal, lateral and Dasral protection on the human brain is composed of 3 parts. For brain, the anterior part of the brain consists of cerebellum, hypothalamus, and thalamus. Midbrain, the smallest and central part of the brain system, consists of tactum and taglectum. ठीक है। और हाइंड ब्रेन, द सेंट्रल रीजन ऑफ द ब्रेन composed of cerebellum, medulla, and pons. Function of brain: control and coordination, conjugative factivation, emotion and behavior, sensory processing, regulation of blood function, हार्मोन रेगुलेशन। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं, तो इसके अंदर वही हमेशा की तरह 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, दिया 4 रहता है, तो अटेम्प्ट एनी 2 out of 4। तो पहला कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वर्टिब्रेट्स इंटीगुमेंट। तो द इंटीगुमेंट्री सिस्टम इन द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट कंपोजेस द बॉडीज outer layer and protects it against several dangers such as infection, abrasion, dissociation, chemical attacks, and radiation injury. In human, the integumentary system includes the skin, a thickened
carneastized epithelium consisting of several layers of its largely water resistant. The skin, the largest and heaviest organ of the body is the skin. It has numerous layers with each different function and covers the entire body surface. There are three primary layers in it. पहला epidermis, outermost layer, dermis, middle layer, subcutaneous layer, innermost layer. The gland cell that function as a unit to discharge a substance such as sweat oil or chemical substance are called gland. The body has two different type of gland, exocrine gland और endocrine gland. ठीक है, और फिर exocrine को further कई पार्ट में डिवाइड किया गया है. ठीक है. Hairs. The epidermis produces thin thread-like structure called hair. They are generally pigmented with give them their color and are made of a protein and called keratin. Nails. The upper surface of the finger and toe are protected by hard bony structure called nails. The development from the base of the nail bed to are made up of protein called keratin. Nails promote fine motor function like picking up small things and protecting their finger lips from harm. फिर comparative analysis of digestive tract in vertebrates. So the digestive system of the human body comprises a group of organs that works together in converting the food into energy and other basic nutrient to energize the body. The digestive system of the human body is the sum of the gastrointestinal tract (GIT) and एक्सेसरी ऑर्गन. तो गैस्ट्रोनोलियल ट्रैक्ट प्लस एक्सेसरी ऑर्गन मिला के एलिमेंट्री कैनल बनते हैं. ठीक है. फिर इसके बारे में आप कुछ और भी बातें लिख सकते हो कि एक्सेसरी ऑर्गन आर ऑर्गन दैट विच participate in the digestive process but are not actually part of GIT. They stimulate the digestion by releasing certain enzyme that help in breaking down food. पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट माउथ होता है, फायरनेक्स होता है और ऑसोफोगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर क्या रेक्टम. इट डाइजेस्टेड वेस्ट एंड स्टोर इन द रेक्टम एज सेमी सॉलिड forces which later exist from the body through the anal canal by the process of deflection. We describe the classification of receptor by stimulus. So receptors can be classified based on the type of stimulus they respond to. A class of receptors by stimulus are पहला क्या होता है mechanoreceptors respond to mechanical stimuli such as states, pressure, vibration and movement. Example muscle, spindle receptor, tendon receptor, etc. दूसरा क्या है thermoreceptor respond to temperature change such as heat, cold. Example warm receptor and cold receptor in skin. फिर क्या है chemoreceptor respond to chemical stimuli such as smell, odorant, taste, materials, pH change and O2 and carbon dioxide level. फिर क्या photoreceptor respond to light stimuli such as intensity, wavelength, color. एग्जाम्पल भी इसके नहीं दिए गए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुली सच एज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. एग्जाम्पल इलेक्ट्रोरिसेप्टर इन स्नैक एंड मैग्नेटोरिसेप्टर इन मैग्नेटिक बर्ड्स. और nociceptor respond to painful stimuli such as heat, cold, pressure, chemical irritants. Example noise parts in the skin and words. फिर क्या है baroreceptor respond to change in blood pressure such as starch pressure. Example baroreceptor in the carotid scale, sinus and aortic arch. Describe the evaluation of urinogenital duct. The urinogenital duct, also known as urogenital sinus, is the shared embryonic structure that gives rise to the urinary and reproductive system in vertebrates. Here's the overview of its evolution. Early vertebrates, fish and amphibians, shared cocoons. और फिर क्या सेकंड क्या है यूरिनोजेनेटिकल डक्ट फॉर्मेशन. फिर आगे बढ़ेंगे टेट्रापॉड्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की तरफ, जिसके अंदर पहले मिलेगा आपको सेपरेशन ऑफ यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फिर डेवलपमेंट ऑफ सेक्स स्पेसिफिक डक्ट्स. और फिर आपको क्या मिलेगा
ममाल्स के अंदर बात करेंगे तो पहले मिलेगा आपको फर्दर सेपरेशन ऑफ यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन ममाल्स यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकम्स ओवर मोर डिस्टिंक्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ सेपरेट यूरेथ्रास एंड एक्सटर्नल जेनेटिकिया। फिर डेवलपमेंट ऑफ pastage gland and seminal verticals in noles. The urinoglamatical duct gap rise to pastage gland and seminal verticals। फिर क्या बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के अंदर तो पहले सिमिलैरिटीज ऑफ ममालियन सिस्टम, फिर क्या मिलेगा प्रेशर ऑफ क्लोकल रिमोन्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पूरा पेपर कंप्लीट होता है। आप इन क्वेश्चन को देख लो, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। हम इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।